So we are just talking about the flow of the fluid through a narrow tube of radius r. Okay. तो हमने यहाँ पे देखा कि there is a maximum speed V max and there should be the V minimum, and here it is also the V minimum, the maximum to minimum. पहले ऐसे तो variation होते हैं. Okay. Okay, दूसरी बात हम यहाँ से आप डिस्कस करेंगे कि if the flow is this way, अगर flow है इधर की तरफ है, then what about the pressure? This is left side and this is the right side. I hope कि आपके लिए भी ऐसा ही होगा डायग्राम में. यही है ना? क्या आपके लिए भी लेफ्ट इधर है और राइट इस तरफ ही है? Yes, sir. Okay, ठीक है. So this is the left side and this is the right side. तो left side is what about the pressure, level of pressure? क्या level यहाँ पे pressure ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे pressure ज्यादा होना चाहिए? Left side high pressure or low pressure? Sir, right side. If the flow is this way, तो यहाँ पे pressure high होना चाहिए या low होना चाहिए? Low. Low. Why low? The flow is this way. The flow should be from high pressure to low pressure. Okay, sir. High pressure to low pressure. There should be यहाँ पे high pressure होना चाहिए. There should be the high pressure, and there should be the low pressure. Means इसका जो flow है, जो speed है, the flow of the liquid, the volume flow of the liquid depends on the pressure difference too. Pressure difference पे dependent होते हैं. और pressure difference है मतलब कि हर जगह pressure same नहीं. यहाँ पे high है तो यहाँ पे थोड़ा कम, थोड़ी सी और कम ऐसे कम होते हैं. यहाँ पे minimum pressure आएगा. इसलिए liquid का flow इस तरफ है. तो यहाँ भी एक pressure का variation है along the length. There is a variation of pressure along the length. HP means obviously the high pressure. HP means the high pressure. LP means the low pressure. So there is a variation of pressure. Yes. If this length is L, suppose this length is L, so there is a variation of pressure. There is a variation of pressure along the length of the tube. Along the length of the tube, obviously. Along the length of the tube. Along the length of the tube. और इस वेरिएशन ऑफ प्रेशर्स को हम कुछ ऐसे भी देख सकते हैं. dV upon dl. dV upon dl. Actually, it is the, sorry, not the velocity. dP upon dl. I'm sorry. dP upon dl. Pressure है ना? dP upon dl. And this is called the pressure gradient. जैसा हमने देखा था. Gradient. This is called the pressure gradient. Actually, यहाँ पे जब length के accordingly कोई changes होता है तो हम gradient term का इस्तेमाल करते हैं. Time के respect में कुछ देखना होता है तो हम rate बोलते हैं. Rate of change in something. There is a change of something with length. Gradient. Change of something with length. Gradient. It's a pressure gradient. dP upon dl. Change of pressure with length. Yes. It is a change of pressure with length. Change of pressure with length. Length के साथ with length of the tube.
इट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, तो हमने एक प्रेशर ग्रेडियंट टर्म देख लिया यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट. हमने यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट को देख लिया. ओके, higher the pressure gradient, higher the flow, higher the rate of flow, higher the volume flow. The volume of the liquid flowing per unit time will be higher. हम यहाँ पे बात करेंगे volume of the liquid flowing per unit time. We will talk about the volume of the liquid flowing per unit time. Make the point. We want to know about the volume of the liquid flowing per unit time. Poiseuilles law. We will talk about the poise आया था ना, poise. तो उसके नाम पे है poise. उसका फुल नेम है poiseuilles. Yes, the full name is poiseuilles. Poiseuilles. Yes. हम देखेंगे पहले poiseuilles लॉ. किसके लिए poiseuilles लॉ? A volume of the liquid, for the volume of the liquid flowing per unit time. Volume of the liquid or fluid गैस के लिए भी होंगे. Volume of the liquid or fluid per unit time. यहीं पे लिख लेता हूँ, per unit time. तो we will discuss about this. और इसकी वैल्यू क्या होगा हमें जानेंगे क्या होना चाहिए. तो इसके लिए जो फैक्टर कंसर्न फैक्टर है वो एक कंसर्न फैक्टर है हमारे पास dp upon dl. We called it the pressure gradient. Higher the dp upon dl, higher the volume rate flow. Higher the volume rate flow. कम समय में अधिक से अधिक वॉल्यूम यहां से आप फ्लो कर जाएंगे. Isn't it? तो Poiseuilles law के according to the Poiseuilles law, by once again Poiseuilles law, the volume d volume upon dt. यहाँ पे पूरा वॉल्यूम v नहीं लिखा, वॉल्यूम लिख दिया. इसको पूरा लिख लेते हैं. वॉल्यूम dt means rate of volume flow. Rate of volume flow is directly proportional to directly proportional to the dp upon dl. dp upon dl ये प्रेशर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. Yes. Also, it is also proportional to the d volume dt is proportional to its volume fourth power of the radius. Fourth power of the radius. और जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड होंगे उतना कम फ्लो होगा. मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो कह रहे तो कांस्टेंट वाली बात है, हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं. तो therefore we have some equation here. Therefore the d volume flow upon time dt is equal to some constant
and that constant is equal to pi by 8. और यहाँ पे inversely proportional to the coefficient of viscosity होंगे, not directly. We can say higher the high viscous, अगर ज्यादा viscous होंगे ना तो rate of flow कम हो जाएंगे, कम viscous होंगे तो flow will be the higher. Lower the viscosity, lower the coefficient of viscosity, the rate of flow will be high. So that's why it is in diameter side. And another factor, dP upon dl, and another factor, the fourth power of the. अब मैं इस चीज को इसको मैं यहाँ पे completely dP upon dl पूरा integrate करूंगा ना इसको, तो we will get simple relation here, pi by 8 eta p upon l, ये total length l आ जाएगा, p upon l पूरा ले लेते हैं length l, fourth power of radius, where p is what? The pressure difference. dP means the change pressure. It is the pressure difference. तो इस टर्म को कुछ ऐसे अलग अलग कर लेते हैं. We can, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको कुछ, okay, इसको यहाँ से हटा ले. So here P means the pressure difference. Pressure difference. The pressure difference. The pressure difference across the tube, across the narrow tube, of length L, ऐसा बोल सकते हैं. Take it to the length L, capital L. Yes. So this law is given by the poiseuilles, and this formula is known as poiseuilles formula. So this is the poiseuilles formula here. क्या है ये? Volume dV, d volume upon dt. हम पूरा नाम लिख सकते हैं इसका. The volume of the rate of flow of, here is the, ऐसे लिख सकते हैं, it is the volume flow we are not volume of the liquid, ऐसे लिख दें, volume of the liquid flowing per unit time. Yes, this is the volume of the liquid flowing per unit time is this. This is the important one. So it is, you have to keep in mind that eta is here in diameter side. Higher the eta, lower the volume flow. Higher the eta, lower the volume flow, lower the rate of volume flow. The rate of volume flow. Is it okay? Yes, sir. So there should not be any doubt. If any, you can ask. This pi by 8 is called experimental constant. Mind it. ये जो pi by 8 है तो क्या बोलते हैं इसको? This is experimental constant.
बाकी सभी फॉर्मूला को हम ला सकते हैं। ये फोर्थ पावर कैसे आ जाता है? बाय डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन गेट इट, यू कैन प्रूव इट बाय डायमेंशनल। दिस इज द, ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट, and all this relation can be achieved by dimensional analysis. और आप सोचोगे कि ये कहां से आ गया, कैसे समझ में आएगा कि ये फोर्थ पावर ऑफ रेडियस पे है या इस पे है? You can get it by dimensional analysis. By dimensional, पूरा का पूरा होल टर्म, बाकी होल टर्म, नॉट ओनली दैट वन, ये पूरा का पूरा जो टर्म है उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से, सिर्फ यही नहीं, पूरे इस टर्म को, इस पूरे टर्म को हम डायमेंशनल एनालिसिस से लेकर के आ सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, हमें पता है यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या डायमेंशन है, यू नो दैट, वॉल्यूम अपॉन dt। मुझे पता है इसकी डायमेंशन क्या है, बोथ साइड डायमेंशन शुड मैच। डायमेंशनल एनालिसिस कर लेंगे, we will get or there is a relation of the fourth power. तो not the, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस रिलेशन को लेकर के आना। डायमेंशनल एनालिसिस से we can simply justify yes the relation is true, and experimental proof कर लेंगे if we have some sources to justify it, we can justify it. Okay, so आज के लिए इतना ही। So this chapter is finished. आपको मैंने डीपीपी दे दिया है, तो आप उस डीपीपी पे पहले काम कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर इज आवर फ्लूइड, वो हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स होगा, तो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कल मॉर्निंग में हम उसे देखेंगे। इस बीच में जब तक हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इस बीच में आपने डीपीपी कंप्लीट कर लेना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।